A very good morning to all of you my dear friends. ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବି ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଯାହା ପଢ଼ା ହେଇଥିଲା ସବୁ ପିଲାମାନେ ରିଭିଜନ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ବିନା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। କ୍ଲାସ୍ ନମ୍ବର 5 acceptance. Definition of acceptance in terms of section 2 clause B. फटाफट ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଜଏନ୍ କରିବା କଥା କରିବେ। ସମୟ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁନି ଆମେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାନି। Section 2 clause B of the act, the term acceptance is defined as follows. कौन कुआ जाइछ देखिबा। When the person to whom proposal is made, ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ଆମେ proposal ଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକ କଣ କରୁଛି signifies his assent, ନିଜର consent ଜଣାଉଛି। ନିଜର consent କଣ ହଉଛି ଜଣାଉଛି। कारण proposal दिया जाइथिला तार मत जानिबा पई assent जानिबा पई। Thereto the proposal is said to be accepted. आउथरे when the person to whom proposal is made signifies his assent thereto, proposal is said to be accepted. The proposal when accepted it becomes promise. सबु पिला माने मन रखिबे। हालांकि डे 1 रो मु मध्य तुमको कहिची ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस आमे ताकू कोन कहिबा ना प्रॉमिस बोली कहिबा। बुझियला? यस। जदि आमे ऊपर डेफिनेशन को एनालाइज करिबा, when the person to whom proposal is made, for example, if A offers to sell his car to B for rupees 2 lakh, जदि A चाहूची तार बिकिबा पई कार B को 2 लाख टंका रे, the proposal made to B, ए जगह रे A B को proposal देला। The person to whom proposal is made, that is B in the above example, and if B जदि signify करूची his consent on that proposal, then we can say that B has signified his consent on the proposal made by him. आमे से केस रे कोई परिबा B तार willingness जणाउची बा consent जणाउची। When B has signified his consent on that proposal, we can say that proposal has been accepted. एवं से accepted proposal को आमे promise बोली कहिता। बुझी होची? Yes. A relationship between offer and acceptance. According to Sir William Anson, acceptance is to offer what is lighted match is to a train of gunpowder. The effect of this observation is that what acceptance triggers cannot be recalled or undone. एहार माने जेमती बंधुकरू तमे ट्रिगर दबेई देले कौन हम सर गुड़ी फुटी जीवो। सिमिलरली जेते बेले गोटे ऑफर को आमे कौन करिबा एक्सेप्ट करि दबा तापरे आमे ताकू कैंसिल करि परिबा नाही। आमे आगो को गले पढिबा रिवोकेशन ऑफ ऑफर। Revocation of an offer can be made before it is valid accepted. गोटे ऑफर वैलिड एक्सेप्टेड होबा पूर्वरु आमे रिवोक करि परिबा। जदि अन्य अर्थ रे कहिबा वंस गोटे ऑफर एक्सेप्टेड हैला होई गले ताको आमे कैंसिल करि परिबा नाही, रिवोक करि परिबा नाही। विलियम आंसन को अनुसार एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट लाइटेड मैच इज टू ट्रेन ऑफ गन पाउडर। जेमते कि बारूद रे निया लगेई देले कोन होई जिवो बारूद जळी जिवो। वंस बारूद रे निया पकेई देले ताकू आउ तमे कोन करि परिबो नाही बारूद अवस्था रे देखि परिबो नाही, पाउंस अवस्था रे देखिबो। सिमिलरली जदि एक्सेप्ट ऑफर को आमे थरे एक्सेप्ट करि देले ताकू आमे कैंसिल करि परिबा नाही। It in effect means that the offer can be withdrawn just before it is accepted. Acceptance converts the offer into promise. आमे ऊपर पढ़ी के आसिले ऑफर एक्सेप्टेड हेले आमे ताको प्रॉमिस कहिबा
and then it is too late to revoke it. Revoke माने cancel करिबा. Once offer accepted हे गले आउ ताकू आमे cancel करि परिबा नाही. एहार अर्थ this means as soon as the train of gunpowder is lighted it would explode. Once बारूद रे निया लागिला माने कोन हो blast करिबो. Train of gunpowder that is offer. It in itself is inert but it is the lighted match. ये केते बेले blast करिवो ना जेते बेले accepted हे जे which cause the gunpowder to explode. The significance of this is an offer in itself cannot create any legal relationship but it is the acceptance by the offeree which create legal relationship. चिंटू मने पकाओ चिंटू रो एग्जांपल मु तुमको लास्ट क्लास रे दउथिली. चिंटू प्रपोजल देला ऑफर देला दैट पर्टिकुलर गर्ल को मिस एक्स को एथिरे कोनोसी वैलिड इंटेंशन नाही unless otherwise it is accepted by Mr. X. Sorry, Miss X. Once Miss X जदि से ऑफर को एक्सेप्ट करि देला ताहेले हमें कहि परिबा दे आर इन ए लीगल बॉन्डिंग. Once an offer is accepted सब पिला माने मन रखिबे MCQ आसुची it becomes promise and cannot be withdrawn or revoked. An offer remains an offer so long as it is not accepted. But जेते बेले accepted हे गला ताकू हमें promise कहिबा बा contract बोली कहिबा. जेमति हमें पढितिले legal rule of valid offer सेमति हमें डिस्कशन करिबा legal rules regarding a valid acceptance. Acceptance can be given only by the person to whom offer is made. Simple कथा जहा को ऑफर दिया है जी सी acceptance सब. मने करो चिंटू ऑफर देइतला मिस एक्स को. मिस वाई केबे भी चिंटू रो ऑफर को एक्सेप्ट करिवो नाही. अर्थात जदि मिस वाई चिंटू रो ऑफर को एक्सेप्ट करूची ताहा वैलिड एक्सेप्टेंस नो. बुझियला? यस. In case of a specific offer it can be accepted only by the person to whom it is made. It is the example of a specific offer. But मने पका हम स्टूडेंट रो एग्जांपल लेथिली. जीए क्लास रे फास्ट होबो ताकू हमें 5000 कैश प्राइस दो. तो इन दैट केस जो स्टूडेंट कोन करिवो क्लास रे फास्ट हला सी प्राइस नबो. In case of general offer case रे it can be accepted by any person who is the knowledge of offer जहा को ऑफर बाबद रे जोना थिला. Acceptance must be absolute and unqualified. मने पका ऑफर रे हमें पढितिले it must be certain होबा दरकार, definite होबा दरकार and not vague. किंतु acceptance absolute हेतिबो कोनोसी टर्म्स एंड कंडीशन रे acceptance होबनी. Unqualified किछि हमें पढितिले ऑफर में भी कंडीशनल पेमेंट एग्जांपल मने पकाओ मु मो कार को सेल करिवि तमे जदी फोन पे रे खाली पैसा दबो. बुझियो जी किंतु acceptance unqualified हेतिबा दरकार. As per section 7 of this act, acceptance is valid only when it is absolute and unqualified and is also expressed in some usual and reasonable manner unless the proposal prescribe the manner in which it must be accepted. प्रथम कंडीशन एहा एब्सोल्यूट होबो एहा अनक्वालिफाइड होबो. द्वितीय कंडीशन ये गोटे रिजनेबल मोड रे एक्सेप्टेड होबा दरकार. फॉर एन एग्जांपल मु तुमको कहिली तुमे मोर प्लॉट किनिबो कि नाही मते यथा शीघ्र जणा. तुमे आसे कि मते भेटी कि कहि पारो, मते गोटे टेक्स्ट मेसेज करि पारो, मते व्हाट्सएप करि पारो किंबा मते टेलीफोन माध्यम रे मध्ये कहि पारो.
बुझी होची जे कोनोसी प्रेस्क्राइब मैनर रे तमे मते इनफॉरमेशन कम्युनिकेट करि पारो जदि मु तुमको कहिछि जे तुमे केवल लिखित आकार दियो ताहले तुमे मते लिखित आकार दो जदि मु कहिछि केवल मते फोन करिकि कुह बा मते भेटिकि कुह पर्सनल मीट करिकि कुह ताहले तुमे मते पर्सनल मीट करिकि कहबो इफ द प्रपोजल प्रेस्क्राइब द मैनर जदि ऑफर देला बेले किछि मैनर को प्रेस्क्राइब करा जाइछि इन व्हिच इट मस्ट बी एक्सेप्टेड केमिति तमे एक्सेप्टेड करिवो जदि मैनर मु जणैछि ऑफर देला बेले देन इट मस्ट बी एक्सेप्टेड अकॉर्डिंगली तुमे सही परि भाबरे एक्सेप्टेड करिवो एग्जांपल Montu offer to sell his land to Nottu for 280 pound. Nottu replied purporting to accept the offer but enclosed a check of 80 pound only. He promised to pay the balance 200 pound by monthly installment of 50 each. It is held that N means not to could not enforce his acceptance because it was not an unqualified one. मु तुमको कौन कहली acceptance केबे भी qualified हबनी conditional हबनी एहा unqualified हबा दरकार मोटू कहूची 280 पाउंड रे मु बिकिबी नबार अछि तो मते 280 पाउंड दे नहीं जा किंतु ये कौन कला 80 पाउंड दला एवं आउरी कंडीशन रखुची मु चारिटा इंस्टॉलमेंट रे 50-50 करिके देबी हेंस आमे कहि परिबा नॉट टू जो एक्सेप्टेंस देइची इट इज नॉट ए वैलिड एक्सेप्टेंस एग्जांपल नंबर 2 A offer to sell his house to B for rupees 1 lakh A कहिला मु लक्षे टंका रे बिकिबी B replied that I can pay 80,000 for it B कहिला मु 80,000 देबी The offer of A is rejected by B A जहा B A जो ऑफर देइतला B ताकू रिजेक्टेड कला as the acceptance is unqualified is not qualified not unqualified बुझिए B however changes his mind and prepare to pay 1 lakh this is also treated as counter offer मन्ने पकाओ लास्ट क्लास रे मु डिस्कशन करिछि क्रॉस और काउंटर ऑफर केस and it's up to A चाहिले ताकू एक्सेप्ट करि पारे जदि चाहिबो ना ना B कि मु आ बिकिबिनी प्रथम थर तते कहली तू ने लक्षे टंका रे तू राजी हेलुनु एबे जो लक्षे टंका तू मते कहूचु लक्षे टंका रे नबा पई मु चाहिले देबी बुझियला यस जेमति हमें पढितिले ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड सिमिलरली एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड जेमति चिंटू तार मनर कथा मिस एक्स को जणाउतिला सिमिलरली मिस एक्स रो मध्य ओब्लिगेशन अछि जे तार एक्सेप्टेंस को मध्य कोन करबा पई कम्युनिकेटेड करबा पई to conclude a contract between the parties the acceptance must be communicated in some perceptible form any conditional acceptance or acceptance with varying or two deviation condition is no acceptance जदि तमे एक्सेप्ट करूछो with some condition बा original terms of condition को violate करी ताहले there is no acceptance such conditional acceptance is a counter proposal एहा को आमे गुटी काउंटर प्रपोजल बोली कहि थाउ and has to be accepted by the proposer एहा केवल प्रपोजर एक्सेप्ट करियो if the original proposal has been materialized into a contract okay further when a proposal is accepted जदि proposal accepted हैला the offeree must have knowledge of the offer made to him
सबु पिला माने सुनतो if he does not have knowledge there can be no acceptance सबु पिला माने बुझता एहार माने कोन फॉर एन एग्जांपल ये होचंती चिंटू बाबू आकर गोटे डॉग थिला जहार ना टॉमी टॉमी कौन हेची ना हजी जाइची मीन दैट टाइम चिंटू रो बहुत अति प्रिय डॉगी थिला टॉमी चिंटू टॉमी की खोजी 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 बहुत दुख प्रकाश कला जे से टॉमी की पाउनी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम चिंटू अनाउंस कला तार डॉगी की जे धरी दबो बा खोजी की दबो चिंटू विल पे 50,000 टू हिम और हर चिंटू ताकू कौन करिवो ना 50,000 रुपीस दो मने कर चिंटू रो गोटे चपला सांग होउची किए सौम्य चिंटू रो सांग होउची सौम्य सौम्य जेतेबेले देखिला से डॉगीटा बाहर बुलुतिला सौम्यर हठात नजर पड़गला अरे 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 ये तो चिंटू बाबूंकर डॉगी सी कौन कला नहीं कि चिंटू को डॉगी फेरई देला सौम्य जानी जे चिंटू बाबू ये ऑफर देइछंती बेली जे डॉगी को जे धरी के दब चिंटू बाबू ताको 50,000 देबे बेली सौम्य जानी सी किंतु कौन कला नहीं कि चिंटू बाबू को फेरई देला परे जानिबा को पाइला जे एमती गोटे ऑफर थला इन दैट केस सौम्य जाय कि क्लेम करूची जे मते कौन करो 50,000 रुपीस दियो कारण मु तम डॉगी की खोजी देइछि ताहले चिंटू सॉरी सौम्य बाबू क्लेम करि परिबे नाही काहे कि ना सौम्य जो एक्सेप्टेंस करिछि बा जो काम करिछि विदाउट द नॉलेज ऑफ ऑफर ता नॉलेज नथिला जे चिंटू एमती किछि डिक्लेयर करिछि बेली हेंस एहा को हमें वैलिड एक्सेप्टेंस बोली कहिबा नै ए प्रपोज टू डी टू मैरी हिम बी इन्फॉर्म एस सिस्टर ध्यान से सुनता बी कहा को जणाउछि ना ए रो सिस्टर को जणाउछि दैट सी इज रेडी टू मैरी हिम सी मैरी करिवो बट हिज सिस्टर डिड नॉट इन्फॉर्म ए रो भौणी ए को जणैलानी अबाउट हिज एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट आज एक्सेप्टेंस वाज नॉट कम्युनिकेटेड टू ए एवं ई जो सेकंड पारार मु एग्जांपल देली एहार माने मध्य ध्यान से बुझिबे जदि बिना नॉलेज रे कि एक्सेप्ट करूची ताहले ताको हमें वैलिड एक्सेप्टेंस बोली कहिबा ना नेक्स्ट एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रेस्क्राइब्ड मोड मु एबे कहि कि आसिली मु जो मैनर रे कहिची तुमे सही मैनर रे एक्सेप्ट करिवो जदि कोनोसी मैनर तुमको प्रेस्क्राइब करा जाय नाही ताहले जे कोनोसी रीजनेबल मैनर रे तमे हमको जनै पारिबो where the mode of acceptance is prescribed in the proposal it must be accepted in that manner जदि proposer does not insist the proposal being accepted in the manner prescribed after it has been accepted otherwise जदि गोटे प्रपोजर देखिला ऑफरर देखिला जेउ वे रे से प्रेस्क्राइब करितला एक्सेप्टेंस दबा पई से वे रे एक्सेप्टेंस दिया जायनी that is not in the prescribed manner the proposer presumed to have consented to the acceptance the proposer is presumed to have consented to the acceptance example if the offer prescribe the acceptance through messenger and offer is send acceptance by email मु कहली तमे मते messenger रे पठाओ से किंतु ईमेल कला there is no acceptance of offer if the offerer informs the offeree that the acceptance is not according to the mode prescribed ताले से जगह रे कोनोसी एक्सेप्टेंस नाही कारण प्रेस्क्राइब्ड मोड रे करा जायनी बट if the offerer fails to do so
मु कहली मेसेंजर रे दियो तमे किंतु मते ईमेल कलो मो पाखे ग्राउंड अछि मु ताको कैंसिल करि परिबी तमे वैलिड मोड रे एक्सेप्ट करिवो किंतु मु कैंसिल कलिनी if the offerer fails to do so it will presume that eha dhara jibo je he has accepted the acceptance and valid contract will arise से केस रे कोन करा जिवो ना एहा को धरि निया जिवो जेउ वे रे एक्सेप्टेड करा गला तमे ताकू सम्मति देलो हेंस it will be constitute a valid acceptance later on it will be become a valid contract time acceptance must be given within a specified time limit गोटे ऑफर जहाँ दिया जाइछि स्पेसिफाइड टाइम लिमिट भितर तुमे एक्सेप्टेंस दबो अगेन प्रश्न आसिला सर जदि ऑफर रे टाइम नाही देन स्टिपुलेटेड टाइम बा रीजनेबल टाइम भितर if any and if no time is stipulated जदि कोनोसी टाइम नाही acceptance must be given within the reasonable time and before the offer lapse करिबा पूर्वरु तमे जनेबो what is reasonable time nowhere is defined in law से reasonable time कोन कोठी लिखा जाय thus it would depend on fact and circumstances of particular case एक निर्दिष्ट केस अनुसार बा केस टू केस reasonable time vary करिवो for example A offer to sell 50 kg of banana at rupees 500 मु 50 kg banana बिकिबी 500 टका रे B communicated the acceptance after 4 days अच्छा कहलो banana 4 दिन परे रहिबो 4 दिन पर्यंत रहिबो पाचिला banana no sauce is not a valid contract as banana being perishable item could not be stay for a period of week 4 days is not a reasonable time in this case next example A offers to B sell his house for rupees 10 lakh B accept the offer and communicated to A after 4 days held the contract is valid as 4 days can be considered as a reasonable time in case of sale of house मेरे साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस मियरली साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस सब पिला माने बुझिबे मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस आर माने कोन मने पकाओ चिंटू रो एग्जांपल एहार माने होउची मने कर चिंटू जणु को प्रपोजल दला मिस एक्स राइट चिंटू कहिला will you marry me तुमे मते मैरी करिवो कि मिस एक्स किछि कहिलानी किछि रिप्लाई देलानी साइलेंस रहिला it does not mean that मौने सम्मति लक्षण ए रूल एठी अप्लाइड होबो नाही mere silence is not acceptance the acceptance of offer cannot be implied from silence of offer or his failure to answer सी जदी रिप्लाई देई पारुनी तमे अज्यूम करिवनी जे से तोमा ऑफर को एक्सेप्ट कला बोली unless the offer has in any previous conduct indicated that his silence is a evidence of acceptance किंतु ए कथा मन रखिबो किंतु जे पर्यंत offer has any previous conduct indicated that his silence is the evidence of acceptance जदि सेमानको भितरे अन्य किछि ट्रांजैक्शन हेइछि बा कथावार्ता हेइछि जेउ जगह रे कुआ जाइछि मु साइलेंट रहिले तमे अज्यूम करिवो जे मु ताको एक्सेप्ट कली इन दैट केस दैट विल बिकम वैलिड एक्सेप्टेंस अदरवाइज गोटिए लोक साइलेंस रहउछि आमे अज्यूम करिवानी जे से हम ऑफर को एक्सेप्ट कला बोली एग्जांपल if offered to buy his nephew's horse for 30 pound saying if I hear no more about it I shall consider the horse is mine at 30 pound
जणे कहला मु तो घोड़ा को 30 पाउंड रे किनिबा को चाहूची जदी तमे रिप्लाई न देलो ताहाले मु आजिम करिवि 30 पाउंड देई कि मु एटा को मो घर को नेई छी द निफ्यू did not reply to uncle F at all से किछि रिप्लाई कलानी he told his auctioneer B to keep the particular horse out of sale of his farm stock as he intended to reserve it for his uncle. By mistake, the auctioneer sold the horse. F sued him for the conversion of his property. Held, F could not succeed as his nephew had not communicated his acceptance to him. कहानी कौन बुझीगला एफ कही घोड़ा किणवा को ता निफ्यू ताकू किछि रिप्लाई देलानी मीन टाइम बी जे कि जने मिडिल मैन थिला से कोन कर देला ना तार स्टॉक को आउ जण को बिकी देला बुझियला तो एफ जाय कि कोर्ट रे केस करूची जे मो प्रॉपर्टी की कोन करिछि से आउ जण को देई देइछि तेनु करी एफ ए जगह रे विन करिवो नाही बा सक्सीड करिवो नाही बा वैलिड हबो नाही काहे कि ना तार निफ्यू कोनोसी जगह रे मेंशन करनी बा राजी हेनी बा कंसेंट देइनी बा एक्सेप्ट करिनी जे से तार घोड़ा को 30 पाउंड रे बिकिबो बोली ए सब्सक्राइब फॉर ए वीकली मैगजीन फॉर 1 year even after expiry of his subscription the magazine company continued to send him magazine for 5 years ये वर्षे पई सब्सक्रिप्शन नहीं देला किंतु 5 वर्ष पई से चलला and also a continued to use the magazine a मध्य magazine की यूज कला but denied to pay the bill sent to him किंतु पैसा दबा को मना कला a could be liable to pay as he continued use of magazine ए जगह रे ए डिनाई करि परिबो नाही जेहेतु से तार मैगजीन के यूज करूची वाज हिज एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर ए केस रे कंडक्ट रु धरि निया जिवो जे से ता ऑफर को एक्सेप्ट करिची एवं ए इज लायबल टू पे काहे कि ना प्रीवियस एक्ट रे देखा जाईची जे मैगजीन पठा जाउतला से पढुतला एवं पे करूतला हेंस जदी तमरो नबार इच्छा नाही तमे सब्सक्रिप्शन को काटो एवं कम्युनिकेटेड करो जे आमे सब्सक्रिप्शन नबा को इंटरेस्टेड ना जदी तमे साइलेंट रहि जाइछो प्रीवियस एक्ट हिसाब रे तुमको बिल दबा को पड़िबो acceptance by conduct that is implied acceptance सब पिला मन देखिबे एटा होची इंपोर्टेंट सेक्शन 8 of the act lays down the performance of the condition of a proposal or the acceptance of any consideration for a reciprocal promise which may be offered with a proposal constitute an acceptance of the proposal. Acceptance by conduct जेमते चिंटू रो केस हम नबा चिंटू मिस एक्स को जणेला चिंटू मिस एक्स को जणेला मिस एक्स किछि कहिलानी साइलेंट रहिला किंतु चिंटू द्वारा दिया जाइथिबा गिफ्ट को एक्सेप्ट करला चिंटू रो सबु इनविटेशन को रक्षा करला चिंटू सहित कथा हैला चिंटू सहित समय बितेला तो इन दैट केस रे हमें कोन कहिबा इट इज ए इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस जदियो मिस एक्स किछि कहूनी किंतु ता कॉन्ट्रैक्ट रु जणा पडुची ही इज एक्सेप्टेड द प्रपोजल मेड बाय चिंटू बुझियला यस तो बी केयरफुल लॉ पढुछ बी केयरफुल समझदार आदमी को इशारा काफी मु बुझेबा कथा बुझौची जे बुझिबा कथा बुझिबो ओके यस द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ ए प्रपोजल ले जिउ जिउ कंडीशन थिला और द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसीडरेशन चिंटू जेउ कंसीडरेशन दउची जेउ गिफ्ट दउची जेउ उपहार दउची तमे ताको एक्सेप्ट करूचो फॉर ए रेसिप्रोकल प्रॉमिस व्हिच मे बी ऑफर्ड विथ ए प्रपोजल ता माने कोन जेउ गिफ्ट जेउ उपहार प्रपोजल रे दिया जिबा कथा
जदि सही उपहार दिया जाउची तमे ताको एक्सेप्ट करूचो constitute an acceptance of proposal. This section provides the acceptance of a proposal by conduct as against other mode of acceptance, that is verbal or written communication. बुझिएला? Therefore, when a person performs the act intended by the proposer as the consideration for promise offered by him, the performance of act constitute acceptance. Example, when a tradesman, এটা example দুইটা পঢ়ি দব অলরেডি মু तुमको বুঝাই সারিনি চিন্টু মন্টু example ଆଉ ବେଶୀ ଆଧରେ କିଛି ଲେଖା ହେଇନି ତୁମେ ପଢି ଦବ सर प्लीज पढ़ी दियंतु when a tradesman receive an order from a customer गोटे बिजनेसमैन ता कस्टमर ठारो ऑर्डर रिसीव कला and execute the order से ऑर्डर अनुसार काम कला by sending the goods the customer's order for the goods constitute the offer which has been accepted by the tradesman subsequently by sending the goods. In this case, acceptance by conduct. भाई सी ऑर्डर देला मोर एति की मिठा दरकार ये तैयारी करी ताको पठेई देला आउ किछि वर्बल कम्युनिकेशन हेनी किंतु ता बिहेवियर जणा पड़िला ये ता ऑफर को एक्सेप्ट करछि बेली when a cobbler sits with a brush and polish a person giving he and polish भूल पड़िली polish a person giving his shoe for polishing constitute as acceptance by the conduct. जेतेबेले गोटे बस स्टैंड रे गोटे मोची बसछि तुमे सीधा गलो तुम गोड़ देखेलो से ताको कोन कला पॉलिशिंग भी कर देला ताहले तुमको ता पैसा देबाकू पड़िबो in that case this is a valid acceptance. नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आसुची जे आमे एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट केमिति करिबा एबे आमे पढी के आसिले एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर जदि प्रिस्क्राइब्ड मैनर नाही ताहले रीजनेबल मैनर विथ प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट जदि प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट नाही ताहले रीजनेबल टाइम भितर एबे आमे पढिबा जे एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट केमिति करा जिवो. There are two issues for the discussion and understanding. बहुत important point. Again जो माने CA फाउंडेशन एग्जाम दउचो सेमान पई बहुत important बा जिउ माने इंटेंड करूचो आगु प्रोफेशनल जीवो ए पॉइंट रे तो क्वेश्चन आसीबाटा ही आसी. There are two issues for the discussion and understanding. They are the mode of acceptance and when the acceptance is complete. Acceptance किभली हबो एवं केते बेले कंप्लीट हो. फर्स्ट कंसीडर द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस को मोड रे हमें एक्सेप्ट करिबा. सेक्शन 3 रे कुआ गला प्रिस्क्राइब जनरल टर्म्स टू मोड ऑफ कम्युनिकेशन नेमली बाय एन एक्ट और बाय ओमिशन इंटेंडिंग thereby to communicate to the other which has the effect of communicating it to other. तमे किछि काम करिकि जणेबो और by omission intending thereby to communicate to other or which has the effect of communicating it to be other. तमे एमिति किछि काम करूचो जहा अन्य को कम्युनिकेट करिवार इफेक्ट बा प्रभाव जणाउछि. देखिबा पढिबा बुझिबा. by act बा एहर माने होछि by conduct. ई जो पाराटा लिखा जाइछि बी रे एआर माने होछि बाय कंडक्ट. कम्युनिकेशन बाय एक्ट वुड इंक्लूड एनी एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स वेदर रिटन ही पारे बा ओरल ही पारे. रिटन वर्ड विल इंक्लूड लेटर रिटन ले लेटर रे जणेबो टेलीग्राम रे जणेबो फैक्स करिवो ईमेल करिवो एंड इवन एडवर्टाइजमेंट रे मध्ये जणेबो. oral words will include telephone message. एक कथा तुम जानिछ. Again, communication would include any conduct intended to communicate like a positive act or sign so as
so that the other person understand that the person acting or making signs means to say or convey. Out there. Again, communication would include any conduct intended to communicate. ମୁଁ କିଛି ଲେଖିକି କହିନି, ୱାର୍ଡରେ କହୁନି, ଟେଲିଫୋନ କରିନି, କିଛି କାମ କରୁଛି ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା। Like positive act or sign so that the other person understand, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝିପାରିବ that what the person acting, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଇଶାରାରେ ବୁଝିଯିବ ଯେ ସେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବା ତାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କ'ଣ କହୁଛି। or making sign ବା ସେ ଯୋଉ ଆମକୁ ସିଗ୍ନାଲ ଦଉଛି, ସାଇନ୍ ଦଉଛି, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ। means to say or convey, ସେ ତାର ଇଶାରାରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବୁଝିହେଲା। communication of acceptance by omission to do something. Such omission is conveyed by conduct or by forbearance on part of one person to convey his willingness or assent. However, silence would not be treated as communication by omission. बुझिए अरे बुझिएला कि बुझिएला सर आउथरे कोंदु। communication of acceptance by omission to do something. Such omission is conveyed केमिति जणा हबो by conduct. जदि मु किछि एक्ट रे करिनी, एक्सप्रेस बा वर्ड रे जणैनी, ताहले मो कंडक्ट रो जणा जिबा दरकार। मु कोन कहिबाकू चाहूची, कोन सिग्नल दउची, कोन कहिबाकू चाहूची। or by forbearance on the part of one person to convey his willingness or assent. मो एक्ट रो जणा पड़ी जीवो मु कोन जणेबाकू चाहूची, कोन मोर इच्छा अछि। किंतु मन रखिबे silence would not be treated as communication by omission. omission केस रे conduct आसीबो किंतु silence आसीबो नाही। A offers 50,000 to B. एग्जांपल होउची A B को 50,000 दबो केते बेले if he does not arrive before the court of law as an evidence to the case. जदि B तू कोर्ट को जाना कि कोर्ट रे प्रमाण देना मु तते 50,000 देबी। B does not arrive, तेणु करी B गलानी on the date of hearing to the court. Here omission of doing an act amount to acceptance. In that case हमें assume करिबा A जो कोर्ट को गला नहीं बा absent रहिला, that means B जो absent रहिला, that means B A रो ऑफर को accept कला। बुझिएला अरे बुझिएला कि बुझिएला। yes sir बुझिएला। communication of acceptance by conduct already बुझाई सारी फिर भी कहूची। for instance delivery of goods at a price by seller to a willing buyer will be understood as communication by conduct to convey acceptance. जणे इच्छुक बायर से चाहूची मु 50 टंका हेले ही कोन करिवि राइस किनिबि बा 500 टंका हेले ही जैकेट किनिबि बा पैंट किनिबि बा शर्ट किनिबि। सेलर कोन कला किछि न कहि से शर्ट दाउ दे देला। व्हाट डज इट मीन? दैट मीन्स सेलर राजी हैला, सेलर रो बिहेवियर कहूची, कंडक्ट कहूची, सी ऑफर को एक्सेप्ट कला। Similarly, one need not explain why one board a public bus or a drop coin in waiting machine. गोटे वेटिंग मशीन रे जो वेट निजर ओजन मापिबा मशीन रे तुम कोन करिया पडुची ना कॉइन पकेउ पडुची। तमे ओजन हेलो कॉइन पकेलो, दैट मीन्स एक्सेप्ट कलो। The first act is conduct of acceptance against its communication to the offer by public by transport authority to carry the passenger. पैसेंजर बस रे जाउचो, गोटे पिला कोन कला, लेट सपोज केंद्रापड़ा रो बस रे बसिला। बस जाउची कोडी ना गाड़ी चलला बादामबाड़ी, दैट मीन्स कटक।
कहला रास्ता रे बस तो जाउतला मु पळे आइले मु काई भड़ा देबी ना भाई एमती होबनी बस चालुची ठीक अछि तुमे बस रे चढ़िलो माने जहा रीजनेबल फेयर अछि ताकू दबा पई तुमे एक्सेप्ट करो द सेकंड एक्ट इज अगेन ए conduct conveying acceptance to use the weight machine kept by the vending company as an offer to render that service for a consideration लॉ कष्ट लागुची अरे बाबा लॉ कष्ट लागुची ना सर चांस नहीं लॉ कष्ट लागिबार यस the other issue of communication the other issue in communication of acceptance आउ कौन कौन issue अछि is about effect of act or omission or conduct these indirect effort must result in effectively communicating its acceptance or non acceptance ये जो indirect efforts अछि behavior अछि conduct अछि act अछि omission अछि ये इफेक्टिवली कम्युनिकेट करूथिबा दरकार जहा जे ताहा गोटे एक्सेप्टेंस बोली इफ इट हैज नो सच इफेक्ट जदि एहार कोनोसी इफेक्ट नाही देयर इज नो कम्युनिकेशन regardless of which the acceptor thinks about the offer within himself thus a mere mental unilateral assent in one's own mind would not amount to communication आर माने कोन बुझिलो एहार माने होउची जदि तुमरो साइन ठीक नाही तमे जहा जणेबा को चाहूछ तार इफेक्टिव कम्युनिकेशन होउनी तुम कंडक्ट रे इफेक्टिव जणा पडुनी ताले से केस रे एक्सेप्टर माने जहा को ऑफर दिया जाइतिला से भाबी हां मोर मु तो एत्ति की एक्ट करूची एहार माने जे अदर पार्टी भाबी नबो मु ता ऑफर को एक्सेप्ट करली एहा संपूर्ण भूल तुमको सफिशिएंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन दबा को पड़िबो एक्ट करिबा को पड़िबो ओमिशन करिबा को पड़िबो कंडक्ट देखेबा को पड़िबो in order to make a effective communication let us now come to the issue when communication acceptance is complete देखिबा as against proposer एक्सेप्टेंस केते बेले कम्युनिकेट होबो एथुरु पक्का गुटे क्वेश्चन पडिबो अगेंस्ट द प्रपोजर अर्थात ऑफरर जी ऑफर देइतला when it is put in the course of transmission to him so as to be out the power of acceptor to withdraw the same सर किछि जणा पडले से कहूची अगेंस्ट द प्रपोजर केते बेले गोटा एक्सेप्टेंस कंप्लीट होबो when it is put in the course of transmission to him ध्यान से बुझो मने करो ये होची ए ये होची बी ए बी को गोटे प्रपोजल देला एवं कहिला तमे चिट्ठी माध्यम रे जणा जेते बेले बी कोन कला से चिट्ठीटा को पोस्ट कर दला सेते बेले एक्सेप्टेंस कोन हे गला स्टार्ट हो गला so as to be out of power of the acceptor to withdraw the same बुझियला against the proposer केते बेले कंप्लीट होबो ना in course of transmission put in the course of transmission against the acceptor कहले ऑफरी पॉइंट ऑफ व्यू रु केते बेले होबो when it comes to the knowledge of the proposer when a proposal is accepted by a letter sent by the post the communication of acceptance will be complete as against the proposer when the letter of acceptance is posted and against the acceptor when the letter reaches to the proposer अरे बुझिएला कि बुझिएलानी सर टिके कंफ्यूजन रहिला आपण कोंतु अरे भाई सिंपल कथा बी साइड रु केते बेले कंप्लीट होबो ना बी जेते बेले से लेटर पोस्ट कला
ए साइड रु केते बेले एक्सेप्टेंस कंप्लीट होबो ना जेते बेले से चिट्ठीटा जाय कि ए पाखरे पहुंचला दैट्स सिंपल बुझियला ना बुझियला जने पिला पचाउछि सर एटी प्रपोजर किए एक्सेप्टर किए ओ माय गॉड एटी प्रपोजर किए एटी एक्सेप्टर किए एटी गोटे एग्जांपल देखो फॉर इंस्टेंस इन द above example if B accept A's proposal and send his acceptance post in 40th, the communication of acceptance as against A is complete on 14th. That is when the letter is posted. As against B, acceptance will be completed when a letter reaches A. हबो अरे हबो ना नहीं सर बुझी होनी आपण टिके क्लारिटी रो सहित कहंतु ओके सब पिला माने बुझिबे सुनो ये होची ए ये होची बी ए बी को देला ऑफर ए बी को देला कोन ना सर ऑफर एक्सेप्ट किए करिवो ना सर बी एक्सेप्ट करिवो ध्यान से बुझिबो बी ता लेटर को पोस्ट करूची लेट सपोज गोटे डेट करो आज का डेट होची 31 अगस्त 31 अगस्त रे बी पोस्ट कला लेटर से कुछ ए पाई इफेक्टिव डेट ऑफ कम्युनिकेशन होची जो दिन बी कोन कला ना से लेटर टा को पोस्ट कर दला बुझियला एवं मने करो ठीक गोटिए सप्ताह परे यानी 7th ऑफ सितंबर 7th सितंबर को से लेटर जाय कि कहा पाखरे पहुंचिला ए पाखरे पहुंचिला से कुछ बी पाई ध्यान से बुझिबे बी पाई एक्सेप्टेंस केबे कंप्लीट होला ना 7 सितंबर पक्का गोटे क्वेश्चन पड़िबो तो ए आउथरे पड़िबो अगेंस्ट द प्रपोजर अर्थात प्रपोजर कहले कि ए पाई इफेक्टिव डेट ऑफ कम्युनिकेशन केबे हबो ना जो दिन एक्सेप्टर से लेटर को पोस्ट कला पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन against the acceptor कहले बी पाई इफेक्टिव डेट ऑफ एक्सेप्टेंस कोन हबो ना जो दिन से चिट्ठीटा जाय कि ए पाखरे पहुंचला when it comes to the knowledge of proposal बुझियला यस acceptance over telephone telex or fax when an offer is made of instantaneous communication like telex, telephone, fax or through email. The contract is only complete when the acceptance is received by offeree and the contract is made at the place where the acceptance is received. However, in case of call drop and the disturbances in the line, there may not be a valid contract. जदि टेलीफोन रे जणला बेले नेटवर्क रहिलानी मेल देला बेले कोनो से गूगल रे प्रॉब्लम आसिला तो से केस रे वैलिड एक्सेप्टेंस होबो नै communication of special condition sometimes there are situations where there are contract with a special condition these special conditions are conveyed tactily and the acceptance of these conditions are also be conveyed by the offeree again tactily or without him even realizing it जेंति कि रॉ केस रे आईबी केस रे तो से केस रे कोन करा होची ताकर कोड वर्ड रहउची इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे
Example, where a passenger undertake a travel, the condition of travel are printed at the back of the tickets. Sometimes these special conditions are brought to the notice of the passenger, sometimes not. बेले बेले यह पैसेंजर मन को जणा जाए, बेले बेले जणा जाए नहीं. In any event, the passenger is treated as having the accepted the special condition the moment brought his ticket. जेते बेले से टिकेट टा किनिला सेई डेट रे जणा जीवो जे कोन हला ना पैसेंजर सबु नॉलेज जानिला बोली. कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस हल्का फुल्का पॉइंट रे किछि नाही. एक्सेप्टेंस सरी गला. कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस सेक्शन 4 रे कुआ गला. कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ए पर्सन टू हुम इट इज मींट. ऑफर केते बेले कम्युनिकेटेड हबो ना जेते बेले जेउ लोक उद्देश्य रे हमें ऑफर दउचे जदी ता पाखरे पहुंची जाउची ताहाले हमें जानिबा कम्युनिकेटेड हे गला. As regard acceptance of proposal, the same would be viewed from the two angles. From the viewpoint of proposer, already हमें discussion करिचे. The other from the viewpoint of acceptor himself. Viewpoint of proposer case रे कौन हबो ना जेते बेले acceptance is put into the course of transmission. Already हमें पढ़िचे ये होची तार summary. From the viewpoint of acceptor केते बेले हबो when it would be complete ना when it comes to the knowledge of proposal. ए पाई केबे ना जो दिन बी ता लेटर को पोस्ट करूची आमे जानिबा जे ए सेई दिन जानि गला. बी पाई को दिन इफेक्टिव डेट ऑफ कम्युनिकेशन हबो ना जो दिन से चिट्ठी जाय कि ए पाखरे पहुंचला. ओके. व्यू पॉइंट ऑफ प्रपोजर यानी ए पॉइंट ऑफ व्यू रु केते बेले हबो ना जेते बेले बी लेटर पोस्ट कला. व्यू पॉइंट ऑफ एक्सेप्टर यानी बी पॉइंट ऑफ व्यू रु केते बेले इफेक्टिव डेट ऑफ कम्युनिकेशन हबो ना जो दिन चिट्ठी जाय कि ए पाखरे पहुंचला. आउ गोटे छोट पॉइंट रहला रिवोकेशन ऑफ ऑफर. आको हमें स्पेशल केस रे मु गोटे 10 मिनिट बा 15 मिनिट रो वीडियो करी पकई देबी तुमे माने देखिबो. ओके. तो आज पाई एतिकी.